Hi guys, today's class is an important one. We're going to be discussing the paper that you've just given so that over the summer you don't have, the uncertainty as to how you did the paper. And since it's probably fresh in your mind right now, what you've written. So let's just go over the paper one time and see how you did it, right? So as per expectation, obviously we said कि 2024 दे रहे हो तो 2022 की information is going to be coming, and we googled कि 2022 की most important information क्या होगी. So obviously, the response was कि it's going to be talking about post-COVID was the main information and the government policies and how they have impacted different economies. And obviously, the Russia and Ukraine war that was going to have a major impact. In fact, अगर हम अभी November 24 का paper जो आएगा, that is also going to be of the same theme. So this is your case study. It's talking about the European Central Bank and the dilemma that they're facing. In the intro, they talk about कि किस तरीके से EU के अंदर 19 countries हैं, and they all have common currency, and उनकी जो monetary policy है that is governed by the ECB together. So that means these 19 countries don't have their own monetary policy. They have to listen to what ECB is saying, right? Like a state. So they've set interest rates, and since July 2021 has aimed to maintain the rate of inflation at 2% in the medium term. That's what they want to do. And interest rates have been held at 0% since March 2016. Now, काफी पुरानी information दे रहे हैं. That is obviously before COVID came and things went haywire. ठीक है जी. Consumer Price Index, they're talking about 2021 से लेके Feb 22 तक की information इन्होंने मांगी है, दी है. But important thing over here is ये CPI है. That's why the values are in 100. These are not inflation rate, but simply how prices are changing, right? तो ये information है, obviously source legit है, and probably इस data के साथ कुछ ना कुछ आएगा. फिर वो कहते हैं March 2022, which is after this data, they're saying कि annual inflation rate जो है, it has hit its high, 7.5% है, and it is forecasted to rise, obviously, post-COVID. And additionally, ECB के जो vice president है, annual economic growth is expected to fall from 4.6% economic growth की बात हो रही है at the end of 2021 यहाँ पे जो है इस टाइम के अंदर जब इन्फ्लेशन इज गोइंग अप, आपकी जो इकोनॉमिक ग्रोथ रेट है वो 4.6 से जो है वो गिर के द एंड ऑफ 2022 के ऊपर एक्सपेक्टेड है कि 0% पे इकोनॉमिक ग्रोथ हो जाएगी. नाउ क्लियरली द इकोनॉमी इज नॉट डूइंग सो वेल. Much higher energy costs and rising food prices tend to have a more severe effect on poor households and those. ये effects of inflation की बात की है. This might be very important for the question that they're going to be giving. फिर उसके बाद they further go on and say the main causes of the rapid rise in the inflation rate are supply side factors. Okay. The rise in energy prices results from a combination of COVID-19 pandemic and the conflict between Russia and Ukraine, which have reduced supplies of oil and gas. Now, that was a serious problem for European countries, especially because most of their energy, gas, and oil comes from Russia, a big percentage, right? Additionally, the Eurozone labor market is increasingly suffering from a shortage of supply as unemployment has fallen to a record low of 6.8% in February 22, which further which with further fall predicted. Unemployment, देखो लेबर की शॉर्टेज हुई है, अनएम्प्लॉयमेंट जो है वो अपने रिकॉर्ड लो के ऊपर है. इनके हिसाब से 6.8 इज द रिकॉर्ड लो,
एंड इट इज एक्सपेक्टेड कि ये और फर्दर फॉल करेगा. दैट मीन्स जो शॉर्टेज है लेबर की वो फर्दर वर्सन होगी. दैट्स अ स्ट्रेंज थिंग बाय द वे. कि अनएम्प्लॉयमेंट रेट गिर रहा है, ऑल्दो वी आर एक्सपेक्टिंग हाई इन्फ्लेशन, अनएम्प्लॉयमेंट फॉलिंग. तो ये कैसे हो सकता है? बट लेट्स सी. सो अनएम्प्लॉयमेंट जो है वो फर्दर रेट गिरेगा. दैट मीन्स शॉर्टेज ज्यादा सिवियर होगी. बिकॉज द राइज because the rise in the rate of inflation is almost exclusively supply side driven, uh, the ECB fears that it will lead to a further fall in economic growth, leading to a period of stagflation. Now, stagflation is saying that economic growth गिरेगी, and this is like cost push inflation, unemployment rise करेगी और economic growth गिरेगी. Where an economy experiences high inflation and low economic growth and unemployment rise at the same time, right? Stagflation को भी they've been kind enough to explain you what that means. फिर unemployment का जो rate है, it's falling down. Unemployment rate is falling down. I wonder why. That's strange. Unemployment अगर supply side driven है, तो cost push inflation I'm thinking in my head about the diagrams, और यहाँ supply side के ऊपर जो है हम unemployment rate जो है वो गिरता हुआ देख रहे हैं क्योंकि shortage of supply है. That's very strange. All this leaves the ECB with a dilemma. Should it increase interest rates substantially now to control the rising rate of inflation and risk weakening? क्योंकि हमें पता है कि जब आप इंटरेस्ट रेट बढ़ाते हो तो उसकी वजह से दो तरफ प्रेशर आएगा. एडी भी गिरेगा और एएस भी गिरेगा. तो दोनों तरफ इकोनॉमी की स्लो डाउन का प्रेशर होगा. अगर सप्लाई साइड के पॉइंट ऑफ व्यू से देखो तो इन्फ्लेशन और वर्सन हो जाएगी, लेकिन डिमांड साइड से देखो तो इन्फ्लेशन जो है वो थोड़ी सी कंट्रोल में आ सकती है, बट एट द कॉस्ट ऑफ इकोनॉमिक ग्रोथ. डेफिनेटली वी कैन एक्सपेक्ट अ क्वेश्चन रिलेटिंग टू दिस. Increase them slightly in the hope that supply pressure will ease soon. This runs the risk of making high inflation more permanent if pressure does not ease. जो कि बात ठीक है. और ज्यादातर तुम देखोगे तो इकोनॉमिक ग्रोथ हमेशा, सॉरी, इंटरेस्ट रेट जो है गवर्नमेंट्स इतनी ज्यादा स्लैश नहीं करती अनलेस, या इतनी एकदम से तेजी से ऊपर नहीं लेके जाती है unless they really are concerned about कि inflation is going out of control. We really need to put brakes on it, right? लेकिन हमेशा हमारी कोशिश ये होनी चाहिए कि इसको आहिस्ता आहिस्ता से, ताकि इकोनॉमी में रीएलोकेशन रिसोर्सेज की थोड़ी सी स्मूथली हो जाए. Or leave interest rate unchanged. You might want to suggest some other policy as a result. Okay जी, क्वेश्चंस क्या क्या थे? पहला क्वेश्चन है 2 मार्क के लिए, बहुत आसान सा सवाल देते हैं. Describe what has happened to consumer prices in the Eurozone between March 2021 to February. Let's go back up. क्या हुआ है? March, ये prices को क्या हुआ है? Probably March से लेके Feb में. CPI का जो direction है, there is an upward direction for you like this. तो ये क्या हुआ है? For 2 marks, there are two things that I'm going to write. Number one, consumer prices have risen. Obviously, we can see this. It has risen. I get 1 mark for this. And your second mark can be you talking about what is likely to happen. Like, for example, overall जो है yearly CPIs have risen except for July 2021. You can do that, but I think my preference would always be कि तुम ये new minus old करके ना, this CPI minus 106 point 53 divided by 106.53 into 100 करके percentage निकाल लो. Probably you're gonna get something like I think it's gonna be, let me do it. Yeah, so it's 4.89%. ये आनी चाहिए. तो 1 mark you can get for this.
or you can even suggest based on the data, it has increased every year except for obviously July 2021. ठीक है, easy 2 marks. Moving on. फिर क्या होता है? With the help of an aggregate demand and supply diagram, identify the main type of inflation in the Eurozone. That's strange. 2 mark के लिए पूरा diagram मांग रहे हैं ये लोग. So your diagram this is your diagram, ADAS का diagram बनाना है. The thing is, identify करना है, real output हो गया, price level हो गया, aggregate demand, aggregate supply. 2 mark वैसे बहुत कम है, कि डायग्राम भी मांग रहे हैं और कह रहे हैं कि आइडेंटिफाई करो कि कौन सी टाइप की इन्फ्लेशन है. तो पूरे आर्टिकल के अंदर देव मेंशन्ड कि सप्लाई साइड रिलेटेड एनर्जी कॉस्ट और इस तरह के प्रॉब्लम्स हैं. तो सप्लाई साइड इनफैक्ट इन वेयर इज दैट, लेट मी टेक यू देयर. ओ इधर पूरी बात लिखी है इन्होंने कि द मेन कॉजेज ऑफ रैपिड इंक्रीज इन द इन्फ्लेशन रेट आर सप्लाई साइड फैक्टर्स, राइट? So clearly your diagram is going to be aggregate supply shifting like this and price level rising like this. और ये तुम्हारे इसमें कैसे मार्क मिलेंगे तुमको? तो क्योंकि सिर्फ 2 मार्क है, 1 मार्क तुमको मिलना चाहिए for shifting this. This is what the marking scheme says कि 1 मार्क तुम्हें aggregate supply को left shift करने का मिलेगा in the diagram. And it's a must thing according to marking scheme कि you identify कि ये cost push inflation है. These are the words used in the marking scheme, and you get your 2nd mark for this. That's what they've done in the marking scheme. So this is how they're suggesting. Possible है कि when the standardized marking scheme comes, they might suggest कि चलो ठीक है, इसको आप cost push inflation नहीं करते हो, but diagram के अंदर एक supply curve shift to the left और एक price going up, तो उसके हिसाब से जो है ये and with an indication के जो है supply side because of energy cost or something. Like I'm saying, ये 2 मार्क के लिए it's very unusual for them to do this. Usually ये 4 मार्क का होना चाहिए था, जिसमें बच्चे जो है supply side factors भी बताते कि energy cost is rising, yeah, labor wage is going up because of the shortage that they've mentioned. You get my idea? तो अभी तक मार्किंग स्कीम के अंदर this is what they're saying कि 2 मार्क इन 2 चीजों के होंगे. उसके बाद सी के अंदर ये कहते हैं consider the extent to which the shortage of supply of labor in the Eurozone may have contributed. Recently, a paper में I remember something like this. May have contributed towards the increasing of the rate of inflation. क्या करना है इसके अंदर? पहली चीज डिस्कस तुमने एनालाइज करना है कि हाँ जी, शॉर्टेज ऑफ सप्लाई जो है उसकी कंट्रीब्यूशन होती है रेट ऑफ इन्फ्लेशन के एंड पे. तो 4 मार्क है, तो पहले मैं क्या जाऊंगा, मैं यहाँ पे लिखा हुआ भी है, सो आई जस्ट पिक इट अप फ्रॉम हियर कि शॉर्टेज होने की वजह से क्या होता है. ठीक है, सो इनफैक्ट I'll write it on the right hand side over here. पहली चीज तुमने क्या लिखनी चाहिए कि जी आपके पास जब शॉर्टेज होती है, शॉर्टेज ऑफ लेबर सप्लाई, तो मैं डिमांड एंड सप्लाई लेबर मार्केट के पॉइंट ऑफ व्यू से सोचूं तो ऑब्वियसली क्या है कि मार्केट में वेज रेट जो है वो नीचे है, बिलो इक्विलिब्रियम वेज है, जिसका मतलब है कि जो क्वांटिटी डिमांडेड फॉर लेबर है वो ज्यादा है क्वांटिटी सप्लाइड फॉर लेबर्स है. Hence you have a shortage. And what shortage does is that usually from analysis point of view, it is likely to increase wages. I get a mark for this. As long as I'm making a connection कि shortage is likely to increase wages. ये मैंने अपने point of view से add किया है.
for you guys it might not that be valid because ये usually A2 के अंदर तुम्हें ये बातें पता होनी चाहिए या O levels में AS के अंदर इसकी कोई क्वांटिटी डिमांडेड एंड क्वांटिटी सप्लाइड की कोई खास डिस्कशन नहीं है तो 1 mark you get for this कि हाँ जी शॉर्टेज ऑफ लेबर सप्लाई वेजेस को इंक्रीज करेगी ठीक है अग्रीइंग विद द आइडिया कि हाँ जी शॉर्टेज का एक लिंक होता है अब इसको थोड़ा सा फर्दर बिकॉज इसका 4 mark है तो इसको थोड़ा सा फर्दर एक्सप्लेन करेंगे कि किस तरीके से राइट किस तरीके से वेल नॉर्मली होगा ये कि जब लेबर की वेजेस राइज करती हैं तो उसकी वजह से द कॉस्ट टू बिजनेस गोज अप राइट ऐसा ही है ना एंड व्हाट दिस डज इज दैट इट देन कॉस्ट ऑफ बिजनेस या कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन बढ़ने की वजह से राइजेस एंड therefore cost push inflation या aggregate supply to the left ये मेरे 2 mark हो गए and I've agreed हाँ जी contribution तो होती है shortage of labor will have a contribution but then is it the main thing well it's really not यहाँ पे mention है a rise in the energy prices result from a combination of COVID pandemic and इनकी Russians ये वो. So that means there are other things which have contributed. So then in my paragraph for 2 marks, I get 1 mark for this, 1 mark for the explanation of the idea. And then the continuing point would be that however, you know, energy costs, energy costs have also contributed to adding the cost of production, right? So that means अब मैंने ये भी बोल दिया कि देखें जी सिर्फ सप्लाई नहीं है energy cost has played a role also in this I get another mark let me go back to the question for a second consider the extent तो मैंने बात ही नहीं की है which is my fourth point over here कि किस हद तक लेबर सप्लाई की जो है वो कंट्रीब्यूशन होनी चाहिए तो अब इस पॉइंट के ऊपर आई वुड सजेस्ट कि देखें जी अगर you know that if if wages takes a larger percentage of costs to businesses then it may have a larger contribution ठीक है so it depends of the relative size के wages की कितनी contribution है या फिर it even it depends कि वेज के इंक्रीज के अंदर या एनर्जी कॉस्ट के इंक्रीज के अंदर दोनों की के अंदर किस में ज्यादा परसेंटेज इंक्रीज आया है you know so that could be obviously of discussion also so that can be my point so ये तुम्हारा extent को as long as you're talking about the extent because there's a reason why they talk about कि किस हद तक it would have an impact right so I said a couple of things एक कि wages कितना percentage usually businesses अगर ज्यादा labor intensive हैं और less technologically intensive हैं तो clearly फिर wage के increase का supply inflation पे ज्यादा बड़ा impact होगा ठीक है लेकिन अगर इंक्रीज जो है
एनर्जी कॉस्ट में ज़्यादा बड़ा इंक्रीज आया है और लेबर की वेजेस उस तरह से इंक्रीज नहीं हुई हैं, तो फिर टेक्नोलॉजी की वजह से जो है और एनर्जी कॉस्ट की वजह से ज़्यादा बड़ा इम्पैक्ट आएगा इन्फ्लेशन के ऊपर, राइट? सो दैट इज हाउ यू गोइंग टू बी that you should have structured your answer for that. ठीक है, so that's how you're breaking your 4 marks. फिर डी कहते हैं using the concept of PED, assess the relative impact on the poor. So the question is about impact on the poorer households, including those on fixed income of rising prices and energy. So much stuff that needs to be answered in this one. Okay, for 6 marks, what do you need to do? So the way the 6 marks is going to be broken down is obviously 4 marks is for your explanation and analysis कि GPED का कैसे impact आएगा on poor income households and fixed income households, दोनों का एक एक मार्क होगा दोनों के डिस्कशन का, and obviously related to food energy के हिसाब से, and then final evaluation is going to be कि overall उसका क्या likely impact आएगा. So let me just suggest how this one's gonna be answered. ठीक है, so let me bring this question here on the side. Now, the first thing that they expect you to recognize is कि ये जो food और energy है इसकी elasticity की क्या situation है. Now, a lot of you, what you're gonna do is you're gonna give me the definition of PED and elastic and inelastic, right? The thing is, they're not going to give you marks for such a simple explanation. You need to connect that to the food and energy. So, for starters, 4 marks का जो तुम्हारा analysis होगा, उसके अंदर what is expected is that you recognize that food and energy is a necessity. Therefore, they should be inelastic. Maybe even like suggest कि इसकी जो value होगी वो less than 1 होगी, which means that the percentage change in quantity demanded will be less when there is a percentage change in price. All of this, but the key thing is that your ability to understand that you know what these things are necessities और वो inelastic हैं. And देखो अब पुअर हाउसहोल्ड के साथ भी बात करनी है, तो अगर पुअर हाउसहोल्ड की बात हो रही है तो the thing with poor household is poor households large percentage of income is spent on food and energy. Therefore, it is inelastic. चलो उसके साथ में और further कर देता हूँ कि वो inelastic है, एक large percentage of their income लेके जाएगा. So clearly this will reduce their purchasing power. So along that line, if you can discuss, तो मैंने इसमें poor household को भी बात कर लिया. अब what about these people with fixed income? So थोड़ा सा ये भी समझा देता हूँ that people with fixed income will have no other source of income. Therefore, rise in prices of food and energy will reduce their ability
to spend, and standard of living will fall and along that line. So you can talk about the stuff. So 4 marks के लिए I think I have included everything necessary for this question. ये मैंने जो है इम्पैक्ट की भी बात कर ली है, फिक्स इनकम वाला भी समझा दिया क्या होता है, जो गरीब लोग होते हैं उनकी क्या प्रॉब्लम होती है. सो अप टू 4 मार्क्स और मैंने इलास्टिसिटीज को भी समझा दिया एंड मेड द कनेक्शन कि ये कैसे इनइलास्टिक गुड्स हैं. इसमें जो डायग्राम वगैरह और इनइलास्टिक पे ज्यादा टाइम नहीं स्पेंड करना है बिकॉज यू नो at the end of the day there's not much marks for something like this. ठीक है. So yeah. फिर उसके बाद जो इवैल्यूएशन का पार्ट है इसके अंदर जो 2 मार्क हैं कि ओवरऑल क्या होगा, असेस करो कि ओवरऑल क्या होगा. तो मेरी फाइनल असेसमेंट तो ये होगी कि कंपेयर कर लूंगा मैं थोड़ा सा इलास्टिक और इन इलास्टिक को इन टर्म्स ऑफ सॉरी पुअर हाउस होल्ड को थोड़ा वेल्दी लोगों के साथ में कंपेयर कर दूंगा. तो ओवरऑल माय इवैल्यूएशन इज गोना बी समवेयर अलोंग द लाइंस that both poor and fixed income households will experience fall in their purchasing power compared to wealthier households that will still be able to afford basic necessities without any reduction in spending, you know. So for them, it's not going to be a challenge, and that is sort of like your conclusion along this line. तो इस तरीके से तुम अपनी बात को कर सकते हो. ठीक है. So that's how this one goes. असल जो टफ क्वेश्चन है दैट इज द लास्ट वन जो हमारे केस स्टडी के लास्ट बिट के साथ भी थोड़ी सी जो है वो लिंक्ड है. Where the key question over here is substantially, right? So for 6 markers जिसका evaluation होगा, that will be your discussion कि भाई ये बताएं कि substantially जो है advantages and disadvantages के केस के अंदर ECB को substantially interest rate increase करना चाहिए to control inflation. So obviously, the first 4 marks in this one goes to the idea, and remember, advantages and disadvantages दोनों की बात की है. So for good 4 marks, you have to talk about both. So as far as the advantages go, advantages के अंदर a main idea is कि अगर आप interest rate increase करते हैं तो आपको पता है कि aggregate demand जो है वो गिरेगा. Sorry, aggregate demand गिरेगा, and as a result you can expect inflation to fall down as a result of that. ठीक है. So that is likely to happen, and the advantage of this whole thing is कि आपको पता है कि interest rate is relatively quicker method. हमने हमेशा बात की है कि AD जो है वो एक शॉर्ट रन के लिए ये इंटरेस्ट रेट की पॉलिसी यूज हो सकती है बिकॉज इसका इम्पैक्ट इज मच मोर क्विकर. और ये पॉलिसी जो है इट्स मच मोर इजी टू इम्प्लीमेंट. सेंट्रल बैंक हैज टू डिसाइड दिस पॉलिसी इन देयर MPC जो मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी की मीटिंग्स होती हैं. इजी पॉलिसी टू अडॉप्ट कि भाई आपने कह दिया कि इंटरेस्ट रेट जो है वो अब से जो है इतने बेसिस पॉइंट कर दिया है, और फिर आपने सर्कुलर भेज दिया सारे बैंक्स को न्यूज़ के अंदर, एंड एवरीवन नाउ नोज एंड दे गोना
start operating. So ये advantages हो गए. You talk about the advantages. फिर उसके बाद you go into the disadvantage. Interest rate बढ़ाने के disadvantage यहाँ पे एक तो obviously we have to remember पूरे इस सारी situation में हो ये रहा है कि the issue is the supply side. If you remember, तो अगर मैं तुमको graphically समझाऊं ये बात, तो price level, aggregate demand, aggregate supply, and what they've been talking about कि किस तरीके से इकोनॉमी के अंदर जो असल इशू आया है दैट इज फ्रॉम द सप्लाई साइड एंड दैट्स व्हाई द प्राइसेस आर गोइंग अप. अब अगर आप यहाँ पे पॉलिसी यूज करते हैं डिमांड साइड पॉलिसी और जिसकी वजह से आपका एग्रीगेट डिमांड गिरता है तो वी आर सेइंग दैट यू माइट बी एबल टू रिड्यूस inflation. But the disadvantage of doing something like this is that since um, since inflation is due to aggregate supply, um, reducing aggregate demand will worsen the economic growth and other objectives. Other objectives में हमारे पास ये inflation है वगैरह वगैरह. So obviously, that is a valid discussion over here. You know what, it can have a major impact. तुम यहाँ पर disadvantages के अंदर, obviously you can talk about other monetary inflation के impact also as a limitation. कि it might have lesser effect कि आपने policy implement की है but then the commercial banks do not follow through and they don't reduce the interest rate and they keep on lending, so increase the interest rate and they keep on lending at lower interest rates and all. So it might not have an effect. So all those limitations are also probably they will also be acceptable according to marking scheme. um, we're suggesting कि ये इस तरह से होगा. In fact, क्योंकि हमारा ये पूरा supply side है, interest rate rise can, क्योंकि business की cost of production will go up, so this can actually further go above also. So one of the disadvantage could be that it may worsen interest rate का rise, worsen um, prices by decreasing aggregate supply. ठीक है, so it's quite possible and that can have a worsening effect. 4 marks के लिए advantage disadvantage I'm sure a lot would be acceptable, but सिर्फ advantage लिखोगे तो 3 मिलेंगे out of 4, और अगर advantages और disadvantage दोनों कर लेते हो तो दोनों side के मिलेंगे. And then in your evaluation you have to obviously talk about, जैसे question है कि substantial increase in the interest rate to control inflation, would it work or not. तो तुम जब substantial की बात करोगे तो clearly you have to have a clear understanding कि देखो जी सब्सटैंशियल का मतलब हो गया कि आपने बहुत ज्यादा इंटरेस्ट रेट को इंक्रीज किया है. तो in my opinion I see more red flag in this whole situation as compared to the green flags. so in my opinion your answer substantial के point of view से तो should be के if increased substantially then economy may have uh, an unanticipated supply shock which which may worsen the whole
the whole economy. So my suggestion would be like small increase will be better. और क्यों बेहतर होगी? Because economy will take the information into account. Okay, that now the central bank is starting to increase the interest rate, so things are gonna slow down a little. तो supply side की तरफ भी थोड़ा सा relief आएगा, and that you know will not have an adverse supply effect, but slight uh, improvement भी आ सकती है overall in the long run again. ठीक है, शॉर्ट रन के अंदर तो आई थिंक द डिसएडवांटेजेस आर मच मोर डायर एज कंपेयर टू द लॉन्ग रन इम्पैक्ट. So as per our discussion, I've given you a little more details of section A. This is what the marking scheme currently suggests. Now for section 2, again, it was much predicted कि inequality पे इस बार आप लोगों के पास आएगा कुछ ना कुछ, and inequality को ठीक करने की policies के ऊपर आएगा. और मेरिट डीमेरिट के ऊपर आई डिड सजेस्ट के मेरिट एंड सब्सिडीज के ऊपर क्वेश्चन इज एक्सपेक्टेड, एंड हाउ डीमेरिट और minimum price पे कैसे उसका impact आएगा. So we'll come to that in just a bit, but let me talk about 2A. Explain how the Gini coefficient is used to measure income inequality and consider the relative strength of two economic reasons suggested for such inequality in a low-income country. So, if you remember, our discussion was how are the marks distributed for 8 marks? You have 3 for knowledge and understanding. You have 3 for the analysis of the reasons that they've mentioned, and 2 marks, sorry, is going to be for the evaluation. So let's consider Gini coefficient की बात हुई है. So just to add something over here, देखो Gini coefficient की जो बात हो रही है, normally, me personally, there's not much that you can explain about Gini coefficient without the Lorentz curve. So if you were to use the Lorentz curve की information, ठीक है, so marking scheme is suggesting something like this for this particular question, कि AO1 knowledge and understanding में Gini coefficient के बारे में बताएं. क्या बता सकते हैं कि नंबर 1 Gini coefficient करता क्या है? Gini coefficient जो है वो inequality को मेजर करने का एक तरीका है, एक फॉर्मूला है बेसिकली. ठीक है, और वो फॉर्मूला वैसे तो लॉरेंस कर्व से डिराइव होता है. So if I was to explain this to you guys, or in the exam if I had done it, I would have actually used the Lorentz curve to show and suggest, लेकिन चलो 3 marks हैं. So if you remember Lorentz curve के हिसाब से, what was going on was that there was a percentage of percentage of wealth or whatever and the percentage of population. और उसके अंदर अगर ये 100% population है और मुल्क की जो है 100% wealth है, तो that becomes our point somewhere around here. और 0 0 के ऊपर यूं equity की लाइन बनती थी, और फिर कंट्रीज के ऊपर होता था कि उनका बेसिकली डिस्ट्रीब्यूशन किस तरह से है, राइट. और फिर गिनी इंडेक्स हम कैसे निकालते थे? ए और बी का एरिया होता था, और गिनी इंडेक्स निकलता था ऑन द बेसिस ऑफ, गिनी इंडेक्स आपका निकलता था, या कोएफिशिएंट कह लो,
it was basically A divided by A plus B, and this entire area represented inequality. So the idea is कि जी गिनी कोएफिशिएंट के अंदर अगर वैल्यूज जो हैं आपकी वो आती हैं इन द रेंज ऑफ 0 to 1. 1 0 मीन्स कि आपकी बिल्कुल एग्जैक्टली जो लाइन ऑफ इक्वालिटी है उसी के ऊपर ही आपकी कंट्री की अगर लाइन आ जाती है तो यू डोंट हैव एनी इनइक्वालिटी, दिस एरिया डिसअपीयर्स इफ दिस इज द मोर क्लोजर इट इज to the equity line, the smaller the number will be. And the more further out it's going to be, the worse it would be. अब इसके अंदर क्योंकि लॉरेंस कर्व की तो वो रिक्वायरमेंट है ही नहीं और सिर्फ गिनी इंडेक्स की बात हो रही है, तो व्हाट दे आर लुकिंग फॉर इज योर सजेशन, ये जो गिनी कोएफिशिएंट है, ये गिनी कोएफिशिएंट इज यूज्ड, इट्स अ न्यूमेरिकल वैल्यू जो इनकम इनइक्वालिटी को मेजर करता है. यू गेट अ मार्क फॉर दैट आउट ऑफ 3. उसके बाद 0 का मतलब ये है कि you have like amazing equality in the country. That means 100% population has 100% wealth distribution. So this would be like perfect इक्वालिटी की सिचुएशन. एंड अगर 1 है तो इसका क्या मतलब हुआ कि एक बंदा है जिसके पास सारी वेल्थ है और बाकी सब जो है उनका कोई सीन नहीं है. तो 1 would represent like extreme inequality. ठीक है, so I think they will be willing to give you basically the 3 marks based on this. Let me see क्या लिखा हुआ है. For a clear understanding of what the Gini coefficient is, example, it is a numerical measure of the extent of income inequality in an economy. If it is equal to the value, will be 0. If it is equal, the value will be 0. That means अगर इनइक्वालिटी नहीं है और इक्वालिटी है तो फिर वैल्यू 0 होगी. एंड ऑन दी अदर एक्सट्रीम, इफ ऑल इनकम इज अर्न बाय 1%, यानी अगर 1 की वैल्यू आ रही है तो दैट इज एन एक्सट्रीम इनइक्वालिटी. नियरर, ये भी एक्सेप्टेबल है कि द नियरर यू आर टू 0 द मोर इक्वली डिस्ट्रीब्यूटेड इनकम इज. सो अलोंग दीज लाइंस इफ यू हैव योर आंसर, नॉलेज एंड अंडरस्टैंडिंग में यू गोना गेट योर 3 मार्क्स. ठीक है. फिर उसके बाद देयर सजेस्टिंग कि जी एंड कंसिडर द रिलेटिव स्ट्रेंथ ऑफ 2 इकोनॉमिक रीजंस सजेस्टेड for such an inequality in low income countries. Now, low income countries के अंदर there are plenty of reasons. They have suggested a few, as you can see on the screen. Reasons may include कि गरीब मुल्कों के अंदर there's lack of employment opportunity, poor vocational training, lack of investments and education and health, poor infrastructure hai, people are not able to get loans and stuff for businesses, for for living and all of that. और भी हो सकते हैं. I think they would accept reasons like corruption also. ठीक है. So you pick two, and like I suggested before also, okay, अच्छे से वाले reasons उठाओ. In my opinion, the good 2 reasons were lack of investment in education and health is a good one, and then even some things like there's lack of access to finance, your poor infrastructure, sure, you know. So basically 3 marks for analysis is going to be about your explanation ke how poor countries ke andar they're not investing in people's education and health, jiski wajah se people don't have good skills and their productivity is low and they're not so healthy, so they cannot work to that effective levels, and as a result people are not able to earn better incomes, और उसकी वजह से जो है the inequality grows even further amongst the people, especially those who have versus those who don't have. फिर जो तुम्हारा 2 मार्क का एनालिसिस है उसके अंदर वो ये कह रहे हैं कि भाई रिलेटिव स्ट्रेंथ ऑफ 2 इकोनॉमिक रीजंस की बात करो. तो जो भी 2 तुम चीज उठा रहे हो उसके अंदर दे वांट कि आप बात करें कि जी वन और दी अदर कौन सी ज्यादा
आपकी कंट्री के अंदर, या डू यू फील कि एक लो इनकम कंट्री के अंदर एक ज्यादा इम्पोर्टेंट चीज क्या है? एंड ऑब्वियसली हैव टू आर्ग्यू ऑन बोथ साइड, लाइक फॉर एग्जांपल इफ आई आर्ग्यू कि अगर मुल्क के अंदर एजुकेशन और हेल्थ केयर के अंदर स्पेंडिंग नहीं होती है, एंड स्पेशली इफ द कंट्री हैज ए वेरी लार्ज परसेंटेज ऑफ पॉपुलेशन, and if they're not able to get their hands on good education and healthcare, they will have tough time in increasing their incomes. And those who do have access will have a very large increase, और उसकी वजह से बहुत ज़्यादा जो है उन कंट्रीज के अंदर डिस्पैरिटी के चांसेस होंगे, बिकॉज हैव आर फ्यू एंड हैव नॉट विल बी अ लॉट। तो उससे बहुत तेजी से आपकी इनइक्वालिटी ग्रो होगी। ठीक है। With the same idea, poor don't have good access to finance. Only the rich ones have, and then they're able to borrow and they are able to expand, जिसकी वजह से उनकी और फर्दर फैक्ट्रीज ग्रो करती हैं एंड देयर इनकम इंक्रीजेस। बट जो गरीब है वो एक छोटा सा अपना बिजनेस स्टार्ट करने में भी उसको बड़ी टफ सेविंग्स वगैरह करनी पड़ती हैं, और बड़ी मुश्किल से दे आर एबल टू रेज मनी इन ऑर्डर टू डू बिजनेस themselves। तो क्लियरली उनके पास भी जो है बड़े चैलेंजेस आते हैं। एंड सो इन योर ओपिनियन इट कुड बी इन टर्म्स ऑफ कि आपकी इकोनॉमी अगर ज़्यादा हाईली पॉपुलेटेड है तो ये वुड बी अ बिग प्रॉब्लम। अगर आपकी इकोनॉमी के अंदर एंटरप्रेन्योरशिप है लेकिन फाइनेंस नहीं है, तो दैट्स अ प्रॉब्लम। सो जस्ट एन आइडिया, जस्ट अ डिस्कशन ऑन दिस, एक अच्छा सा फिर इन कंक्लूजन, यू नो, द स्ट्रेंथ वाइज अगर आप कहते हो कि एजुकेशन और हेल्थ केयर अच्छी हो जाएगी, तो ऑटोमेटिकली जो है लोग इंफ्रास्ट्रक्चर के ऊपर खुद ही स्पेंडिंग करेंगे, अपने पैसे लगाएंगे और इम्प्रूवमेंट्स लेकर आ सकते हैं, इवन दो इफ द गवर्नमेंट इज नॉट डूइंग इट। Having infrastructure and not educated people is also not much of benefit. Income disparity के अंदर तो खत्म नहीं होगा, इंफ्रास्ट्रक्चर बना दिया, the rich will continue to um, will continue to produce and make more incomes, but गरीब का तो कोई काम नहीं होगा। मे बी उनके लिए इनकम्स वगैरह इंक्रीज हो सकती हैं बिकॉज दे बिकम सैलरी, बट डिस्पैरिटी का तो मुझे कोई खास क्लियर वो नजर नहीं आता इसके अंदर। सो evaluation would be along those lines. Your discussion on those two factors will have to be discussed over here. ठीक हो गया। मूविंग ऑन। फिर उसके बाद आपका जो पार्ट बी है, assess the extent to which government policies to reduce income and wealth are likely to be successful। ये क्वेश्चन है पॉलिसीज के ऊपर। रीडिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम करना है, पूरा चैप्टर था इसके ऊपर कि रीडिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम के अंदर। नाउ दिस इज मार्क्ड इन अ डिफरेंट वे। इसके अंदर आपकी मार्किंग होती है AO1 एंड AO2 के अंदर। लेवल 1, लेवल 2, लेवल 3 के अंदर इसकी मार्किंग होती है, और AO3 के अंदर भी लेवल 1 और लेवल 2 के अंदर मार्किंग होती है। सो इन ऑर्डर फॉर यू टू क्वालिफाई फॉर गुड, what needs to be there? So in your discussion 8 मार्क्स जो है AO1 और AO2 के हैं, उसमें नॉलेज, अंडरस्टैंडिंग एंड एनालिसिस सब चीजें आ जाती हैं। तो बेसिकली आपने क्या लिखना है? हैव दे मेंशन्ड कि कितने गवर्नमेंट पॉलिसीज के ऊपर? I would suggest take 3 policies, right? I hope you would have done that. Progressive income tax should have been on the top of your list. Progressive taxation क्या होता है, उसके एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस। ठीक है, दोनों एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस तुमको देने होंगे प्रोग्रेसिव इनकम टैक्स के। प्रोग्रेसिव इनकम टैक्स क्या होता है? दैट the average tax rate you're charging is higher for people whose incomes go up, and it's lower for people whose incomes are going down. This is your knowledge and understanding. फिर एडवांटेज के अंदर क्या होता है प्रोग्रेसिव के अंदर? कि प्रोग्रेसिव के अंदर the advantage is it's much more it's easy to collect, it's much more fair,
people who are earning high incomes have the ability to pay, so hence you can charge a higher tax rate onto them. But from the disadvantage point of view, you could suggest that, they create disincentive to work. It may demotivate people who are working harder. कि यार, what, हम पे इतना high tax लगाते हैं. It's better to work lesser hours than work more hours. So that can be very, negative in that way. And even large businesses, when they're heavily taxed, they might feel, what's the point of, running these big organizations and all. तो एक ये डिस्कशन हो गया. दूसरा, अगेन तुमको क्या करना है, इनइक्वालिटी को कम करना है. तो रिमेंबर, मिनिमम वेजेस क्या होती हैं? मिनिमम वेज इज व्हेन आपका जो लोएस्ट स्किल्ड वर्कर जो होता है, जो फुल टाइम वर्कर होता है, they are going to get at least this much amount of money in the economy. तो वो आपका बेस रेट बन जाता है. you know सो उसकी वजह से जो एक बिल्कुल लो स्किल्ड बंदा है, आपने देखा एज अ गवर्नमेंट दैट मिनिमम वेज शुड बी एटलीस्ट 30,000 रुपीज, जिसके अंदर रोटी, द फूड, द ट्रांसपोर्टेशन, द मेडिकल, द हेल्थ केयर, द sanitation, housing, transport, all of this can be taken care of. So, this is how much the wage, least skilled workers should earn. What are the advantages and disadvantages? The advantages: people's affordability for goods and services will improve, their livelihoods will improve, their standard of living will be bare minimum at least. The disadvantage would be कि government को इस policies को implement करने में tough time आएगा. Businesses will be reluctant to hire as many, and unemployment may actually rise as a result of that. बहुत ज़्यादा नहीं करो, but at least, advantage disadvantage करो, qualify करो. अगर तुम एक पॉलिसी को एक्सप्लेन करते हो, उसका एडवांटेज और डिसएडवांटेज नहीं लिखते हो, तो दैट्स बैड. you're not qualifying for an L3 grading. सो जो तुम्हारा 8 मार्क है, उसकी L3 की जो ग्रेडिंग होती थी, दैट वाज आउट ऑफ 8 मार्क्स. L3, सॉरी, इस तरह से नहीं लिखते, कि वो जो 8 मार्क्स है, उसकी L3 की ग्रेडिंग वुड बी समवेयर अराउंड 6 to 8. यू नो एंड L2 एंड L1 के हिसाब से it would be somewhere around, I think, 1 to 2, and this would be around 3 to 5, और इस तरीके से तुम्हारी मार्किंग होती है. तो if you're doing at least 2 to 3, you know, I would say कि चलो एटलीस्ट 3 होना चाहिए. मेरी नज़र में इनमें से 3 एटलीस्ट होनी चाहिए थी. और उसकी एडवांटेजेस डिसएडवांटेजेस को डिस्कस करते हो, तो फिर तुम्हारे पास जो है L3 की अच्छा आंसर बनता है. यू वुड गेट मैक्सिमम 8. ठीक है. Accept any valid policies, but the analysis must focus on how may be used to redistribute income, wealth, and their advantages and disadvantages to be credited. Now, before the exam, I made sure to clarify this. Okay, limitation of these policies are not evaluation. Evaluation is more circumstantial. कि जब आपने ये पॉलिसीज प्रपोज की हैं, इनकी सक्सेस ऑफ दिस पॉलिसीज जो है, उसकी लाइवलीहुड के ऊपर बात करो. तो जब हम बात करते हैं कि अगर लेट्स सपोज तुमने प्रोग्रेसिव की बात की है, अब प्रोग्रेसिव में हाउ सक्सेसफुल द गवर्नमेंट इज लाइकली टू बी, द थिंग इज, इसके अंदर जब आप इनकम टैक्स लेते हो, you have to make sure the maximum number of people are paying taxes. It is not only those salary classes who don't have the ability to evade taxes are paying, and other big businessmen and all of them are evading taxes. Like, for example, Amazon, such a big company, hardly pays any taxes because they're hardly making any profits. Why? Because they know how to do gimmicks in the books, and they show कि हमारे पास इतना profit नहीं हो रहा. So इस तरीके से there are plenty of people and businessmen who have the ability to hide their profits and show expenses and reduce their corporate taxes. But एक जो salaried बंदा होता है,
उनकी सैलरी तो एट सोर्स ही कट जाती है, so those people are unable to get their tax cut. So if the state does not have a good solid tax base and tax laws are not being followed, then the policy is going to fail. Similarly, जब आप minimum wage लगाते हो और आपने substantial minimum wage नहीं लगाई है, कि आपने आपकी इकोनॉमी के अंदर इतनी महंगाई है कि 40,000 मिनिमम वेज होनी चाहिए फॉर द लीस्ट स्किल्ड वर्कर, बट यू ओनली कीपिंग लाइक 30,000, द पॉलिसी इज नॉट गोइंग टू वर्क. अब आपने मिनिमम वेज लगा दिया, लेकिन आपकी इकोनॉमी में बिजनेस जो है, बिजनेसमैन जो हैं, वो अभी भी लोगों को लो वेज ही दे रहे हैं, बिकॉज एट द एंड ऑफ द डे देयर सो मच अनएम्प्लॉयमेंट that people are so desperate that, you know, at the end of the day, they're willing to work for 30,000 also, even though the government has announced a 40,000 ka minimum wage. Do you understand what I'm saying? We're talking about the assessment of the likely success of these policies. तो ये बड़ी circumstantial situations होती हैं जिसके अंदर these policies may or may not work. तो एक अच्छी policy will be progressive taxation is a good policy. State essentials or transfer payments जो आप गरीबों को directly करते हो, these are good policies. The government should have a balance of these, not focusing on one, but इनके जो वो cheating points होते हैं, government needs to make sure that they take those into consideration. तो ये तुम्हारा evaluation का discussion होना चाहिए. मैं दोबारा बता दूं, इन पॉलिसीज की अगर तुम लिमिटेशंस या डिसएडवांटेजेस को समझ रहे हो, evaluation है, तो that's not it. सक्सेस होगी वो पॉलिसी की नहीं होगी, that is what matters. Okay, जी. All right, moving on. Then your question, 3 part A, with the help of an example of each, explain the difference between merit good and demerit good. So knowledge and understanding में तुमने ये समझाना है. And consider whether subsidies given to merit good will be effective. Always को मैं skip कर रहा हूँ, वो evaluative है. Will always be effective in increasing its consumption. तो AO1 क्या है? AO1 के अंदर मेरिट और बी मेरिट के बीच में डिफरेंसेस एग्जांपल के साथ समझानी है. फिर सब्सिडीज हाउ इट वर्क, AO2 के अंदर सब्सिडीज हाउ इट वर्क, you have to talk about that. किस तरह supply will increase, lower the prices, supply will increase. But should we talk about अगर वो inelastic है तो it will have a larger change or not, right? वो AO1 में जाएगा कि AO2 में जाएगा या इवेल्युएशन के अंदर जाएगा? सही है, इवेल्युएशन तो is the always वाला discussion that needs to be done. So just a moment, what are they suggesting? आपने कैसे करना है इसको? 3 को, let's take a look at this. आसान है. सबसे पहली चीज 3A के अंदर, what gives you the 3 marks for knowledge and understanding? A merit good like healthcare and education is thought to be desirable, but it is underconsumed and underproduced. थोड़ा सा और करना, please make sure इतनी सी बात नहीं करना. Merit goods are usually similarities नहीं रखना. Merit similarities लिखा होता तो merit और demerit दोनों private goods होते हैं. Differences की बात हो रही है. ये desirable है, वो undesirable है. ये underconsumed, underproduced है. ये overproduced और overconsumed है. दोनों के अंदर इंफॉर्मेशन फेलियर है. दैट्स अ सिमिलैरिटी. आई डोंट नो व्हाई दे गिविंग मार्क फॉर दैट, लेकिन you know, they are suggesting a mark for it. However, they should not be doing that. ठीक है. One could have been the definitions can benefit those who pay for it, uh, um, but has a positive spillover on the third party. Or इसके अंदर your definition could be it may benefit those who pay for it, but it has a negative externality or negative spillover on the third party. So somewhere along that line, but I don't know why they're doing. They should not be giving mark for this. ये similarity है, ये difference नहीं है. फिर AO2 के अंदर AO2 के अंदर सब्सिडीज किस तरीके से जो है सप्लाई को इंक्रीज करती है, और उसकी वजह से you could have made a diagram over here also. They would probably
as long as your diagram is explaining कि किस तरीके से supply will increase और वो जो under consumption है वो खत्म हो जाएगी, जो लोग afford नहीं कर सकते थे या जो भी, but the idea, I think you should even like define subsidy and पूरा एक fulsome लिखो कि subsidy is a financial incentive given to producers to increase supply. As a result, if the supply curve shifts to the right because the cost of production falls, तो उसकी वजह से जो है प्राइस गिरने की वजह से even people who, because remember the question is about, the question is effectively increase the consumption, so your focus needs to be there, right? That is what you had to do. और किस तरीके से प्राइस गिरेगी तो बढ़ जाएगी. However, demand is price inelastic, और देखो अब subsidies will not work is also over here. इवैल्यूएशन के अंदर ही, सॉरी एनालिसिस के अंदर ही है कि सब्सिडी आपने दी, बट विल इट बी एबल टू इंक्रीज सप्लाई? वेल द थिंग इज, क्योंकि डिमांड इनइलास्टिक होती है तो उसकी वजह से बहुत थोड़ा सा इंक्रीज आएगा. या दूसरे एंड के ऊपर पहले आपने कहा कि भाई इंफॉर्मेशन फेलियर की वजह से लोग जो है मेरिट गुड कंज्यूम नहीं करते हैं, तो सब्सिडी भी अगर मिल जाएगी तो लोगों के इंफॉर्मेशन फेलियर का मसला तो खत्म नहीं हुआ ना, दैट इज स्टिल देयर, तो इसीलिए सब्सिडी विल नॉट वर्क. डू यू गेट इट? तो आई वुड से अगर सब्सिडी का स्टार्टिंग पॉइंट तुमने अच्छा लिखा है और ये नहीं लिखा तो 1 मार्क लूज करोगे, 2 मार्क तुमको मिल जाएंगे फॉर अ नाइस सब्सिडी की एक्सप्लेनेशन एंड हाउ सप्लाई विल इंक्रीज एंड हाउ कंजम्पशन विल इंक्रीज इफ यू कंक्लूडेड द होल पॉइंट. 2 मार्क वहां मिलेंगे, 1 मार्क इसका लूज हो जाएगा अगर तुमने नहीं लिखा तो. अब इवैल्यूएशन के अंदर क्या है, लेट्स गो बैक टू द क्वेश्चन अबव. कंसिडर subsidies देना will always be effective. Will it always be effective? तो इसके अंदर a larger explanation continuing with this idea कि government अगर सब्सिडी देती है तो इट इज क्वाइट पॉसिबल कि सब्सिडी आपने दी मेरिट गुड्स के अंदर टू द प्रोड्यूसर, लेकिन प्रोड्यूसर ने जो है उस सब्सिडी को यूटिलाइज ही नहीं किया इन ऑर्डर टू इंक्रीज द सप्लाई ऑफ द गुड्स. ठीक है, तो उस केस के अंदर जो है वो सब्सिडी जो है वो इट्स नॉट गोइंग टू वर्क सो इफेक्टिवली. सब्सिडी आपने गलत गुड के ऊपर दे दिया, गलत मेरिट गुड, उस मेरिट गुड की कोई डिमांड ही नहीं है मार्केट के अंदर इस वक्त तो ज्यादा फोकस जो है एजुकेशन की जगह जो है आपका ज्यादा फोकस होना चाहिए था हेल्थ केयर के ऊपर, क्योंकि आपके यहाँ लोग बीमार ज्यादा हो रहे हैं. तो वो जो सब्सिडी है, वुड दैट बी, will that increase the supply of that good as such? So maybe it might not, because people are not valuing that good as such. Do you understand? So evaluation ke andar, will giving the subsidy will always be an effective idea. Now I'm sure most of you are thinking कि फिर ये कहाँ जाएगा कि सब्सिडी की जो है there is an opportunity cost and all, तो क्या वो कंसिडर होगा इस सारी चीजों के अंदर? Probably they will, लेकिन अगर तुम क्वेश्चन को देखो तो consider whether the subsidy given to a merit good, given दे दी है merit good वालों को, तो will it always be effective in increasing consumption? So they're really not asking you कि भाई subsidy की लिमिटेशन बताओ, बट रादर सब्सिडी दे दी है, अब बताओ कि क्या उस गुड को सब्सिडी देने के बाद विल इट हैव एन इम्पैक्ट और नॉट. अब मैंने प्रोड्यूसर को सब्सिडी दे दी है लेकिन वो सब्सिडी को यूज नहीं करता सप्लाई इंक्रीज करने के अंदर, तो वो उसकी मार्किंग होगी. ठीक है, they might make adjustments to this based on, I'm sure a lot of students will write कि सब्सिडीज की जो है वो एक अपॉर्चुनिटी कॉस्ट है और वो कहीं और यूज होनी चाहिए वगैरह वगैरह. Let's see if they will consider that in the final marking scheme or not. But as of right now, they feel that, this is what we were really asking the kids. Okay? So that's how this one is going to be answered. फिर उसके बाद आते हैं 3B के अंदर. बड़ा स्पेसिफिक क्वेश्चन पूछा है, उन्होंने कहा है कि देखो जी मिनिमम प्राइस अगर हम लगाते हैं तो क्या वो अच्छी पॉलिसी है डीमेरिट गुड की रिडक्शन के अंदर. ठीक है, मिनिमम प्राइस के ऊपर एक अच्छी सी नॉलेज एंड अंडरस्टैंडिंग तुमने देनी है. अगेन दिस इज अ 3D, L1 L2 L3 की बेसिस पे AO1 और AO2 की मार्किंग आएगी.
विद योर गुड अंडरस्टैंडिंग कि मिनिमम प्राइस लगाने की वजह से डीमेरिट गुड्स की कंजम्पशन रिड्यूस होगी और नहीं भी होगी। दोनों दोनों साइड, एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस ऑफ इम्प्लीमेंटिंग मिनिमम पॉलिसी। तो क्या कहते हैं ये लोग, मिनिमम पॉलिसी अबव इक्विलिब्रियम लगाओगे तो उसकी वजह से डीमेरिट गुड्स की कंजम्पशन में रिडक्शन आएगी। वुड दे क्रेडिट द डायग्राम? मे बी, मे बी नॉट। डायग्राम के स्पेसिफिक मार्क्स नहीं होंगे, लेकिन अगर तुम उस डायग्राम को यूज करते हुए मुझे एक्सप्लेन कर देते हो कि जी डीमेरिट गुड की जो है वो, देखो मैं अपने डायग्राम में, क्योंकि डीमेरिट है मुझे पता है कि मैंने आगे इसको इन इलास्टिक के साथ ही कंपैरिजन करना है। तो हमें पता है कि आप मिनिमम प्राइस कहाँ लगाते हो, आप मिनिमम प्राइस लगाते हो अबव इक्विलिब्रियम, राइट? दिस इज वेयर यू कीप इट। तो ये लिखते हैं पी मिनिमम, डायग्राम में इस तरह से होता है। और किस तरीके से, इफ यू नोटिस, कंजम्पशन पे फोकस करना था, राइट? तो किस तरीके से पहले ये कंजम्पशन हो रही थी क्यू ओ, और अब ये कंजम्पशन हो रही है, तो देयर माइट बी अ रिडक्शन। ये मिनिमम लगाने की वजह से जो है रिडक्शन तो आ सकती है। काउंटर इज प्रॉब्लम्स ऑफ यूजिंग मिनिमम प्राइसेस। वो कैन इंक्लूड कि जी आपका ये ज़्यादातर डीमेरिट गुड्स इनइलास्टिक होते हैं, तो उसकी वजह से जो है कोई खास रिडक्शन नहीं आएगी। दैट्स अ गुड वैलिड पॉइंट, अच्छे से एक्सप्लेन करोगे तो 2 मार्क के लिए वो वैलिड है डिस्कशन। इन मिनिमम प्राइस लगा दिया, लेकिन इंफॉर्मेशन फेलियर तो आज भी है, लोग अभी भी जो है वो कंजम्पशन करेंगे। और फिर ब्लैक मार्केट्स के अंदर सस्ते रेटों के ऊपर भी हो सकता है चीप रेट के ऊपर मार्केट में मिले, अच्छी गवर्नमेंट की पुलिसिंग नहीं हो तो ये तो हो गया मिनिमम पॉलिसी। देन देयर सेइंग alternative policies may be also considered, और that can include indirect taxes से भी काम हो सकता है, एजुकेशन से भी हो सकता है। लेकिन प्लीज, अगर तुम ये पॉलिसी सजेस्ट कर रहे हो आफ्टर ऑब्वियसली मिनिमम पॉलिसीज का एडवांटेज एंड डिसएडवांटेज को डिस्कस करते हुए, फिर ऑल्टरनेटिव पॉलिसीज को भी तुमने एडवांटेज और डिसएडवांटेज के साथ डिस्कस करना होगा। क्योंकि 8 मार्क का है तो आई वुड रिकमेंड कि एटलीस्ट तुम 2 पॉलिसीज और ऑल्टरनेट डिस्कस कर सकते थे, ताकि 4 मार्क तुम्हें इस पे मिल जाते आउट ऑफ 8, और बाकी 4 मार्क 2 पॉलिसीज के एडवांटेजेस डिसएडवांटेज। हो सकता है एक को भी तुमने अच्छे से लिखा हो तो 3 मार्क उसके एडवांटेज डिसएडवांटेज और एक्सप्लेनेशन के 3 मार्क तुमको वहां भी मिल सकते हैं। ठीक है। Consider points to consider will include ease of introducing the policy, the time, the cost, receptions by consumers। ये बेसिकली एडवांटेज डिसएडवांटेज की बात कर रहे हैं कि अगर तुम डिफरेंट पॉलिसी सजेस्ट करते हो तो उसकी यहाँ पे तुम बात कर सकते हो कि एजुकेशन, आप कहते हो कि एजुकेशन की वजह से एग्रीगेट डिमांड जो है वो गिरेगी बिकॉज लोग समझदार होंगे। लेकिन एजुकेशन का तो तुमको पता है कि इट माइट बी कॉस्टली, इट टेक्स लॉन्ग रन टू हैव एन इफेक्ट, एंड इफ इट्स नॉट गुड डिजाइन तो देन इट विल नॉट हैव एन इफेक्ट। अब वो जनरल से पॉइंट हमारे अप्लाइज ओवर हियर, वो आप यहाँ पे एक्सेप्टेबल है। अब इवैल्यूएशन के अंदर लेट्स गो बैक टू द क्वेश्चन, इज द बेस्ट पॉलिसी टू रिड्यूस। सो नाउ मिनिमम प्राइस बेस्ट है कि नहीं है, तो अब उसके सर्कमस्टांसेस को मुझे देखना पड़ेगा। तो ऑब्वियसली इट रिक्वायर्स एन असेसमेंट ऑफ एटलीस्ट वन अदर पॉलिसी जिससे मैं मिनिमम प्राइस को कंपेयर करूंगा। देखें जी, मिनिमम प्राइस के साथ जो प्रॉब्लम है, मिनिमम प्राइस गवर्नमेंट को लगानी पड़ती है सोच समझ के, और फिर उसकी सुपरविजन करनी पड़ती है। और जहाँ पे भी उनको नज़र आता है कि जी हमारी पॉलिसी पे इम्प्लीमेंटेशन नहीं है, तो दे हैव टू देन मेक श्योर कि लॉ फॉलो हो रहा हो, एंड दे हैव टू गो थ्रू द होल प्रोसीजर, right? It can be very legislatively difficult to do and very time consuming also, and expensive for the government to do as well, you know. So some other policy अगर तुम suggest करते हो, education या taxation, indirect taxation would be much more simpler। demerit goods के ऊपर high taxes लगाओ, गवर्नमेंट को अच्छे टैक्स रेवेन्यूज भी मिलेंगे, और बड़ी आराम से कंपैरेटिवली मिनिमम प्राइस और उसकी लेजिस्लेशन से तो बहुत ज़्यादा आसान है।
कि आप इनडायरेक्ट टैक्सेस लगाएं और हाई इनडायरेक्ट टैक्सेस लगाएं, गवर्नमेंट भी कमाए और क्वांटिटी में रिडक्शन थोड़ी सी लिमिटेड होगी, लेकिन एटलीस्ट देयर विल बी, अगर हाई टैक्सेस लगाओगे तो देयर माइट बी अ सब्सटेंशियल decrease in the long run also. People will change when they see so high. So is it a very good policy? In fact, ये policy के point of view से one of the major thing I would say is, I think मेरी evaluation would more should have been like this, कि देखिए मिनिमम प्राइस लगाने की वजह से रिसोर्स की एलोकेशन ज़्यादा हो जाती है, विच शोज कि बहुत ही पुअर रिसोर्स रीएलोकेशन है। उससे बेहतर है कि अगर आप सप्लाई को डिक्रीज कर देते हैं थ्रू इनडायरेक्ट टैक्सेस, तो दैट वुड बी अ बेटर थिंग, क्योंकि कम से कम प्राइस मैकेनिज्म इज ऑपरेशनल एंड रिसोर्स रीएलोकेशन इज नॉट पुअर। ये मेरी इवैल्यूएशन होनी चाहिए वैसे तो, कि मिनिमम प्राइसेस के अंदर रिसोर्स पुअरली एलोकेट हो रहे हैं, और इसके अंदर जो है एटलीस्ट दूसरी किसी और सिनेरियो के अंदर जो है डिमांड एंड सप्लाई के रूल्स वुड बी फॉलोड, राइट? तो दैट वुड बी दैट इन दिस। फिर उसके बाद आ जाए जी हमारे मैक्रो साइड के ऊपर। Macro site के अंदर you have 4A with the help of a diagram explain what is meant by circular flow. This was as expected, exactly बोला था circular flow पे question आएगा और supply side के ऊपर आएगा। Protectionism, I wasn't looking forward for a question on this side, but at least अगर यहीं तक बात हो जाती तो फिर मसला नहीं था। Although this is one of those जो बहुत दफा पुराना है, I'm sure a lot of kids would have done this because it's a very common question to give. Like a circular flow was one of the expected one. So with the help of a diagram, explain what is meant by circular flow of income in an open economy. Diagram banana tha, and consider the extent to which it can explain economic growth in such an economy. Kis had tak open economy ki case ke andar economic growth can be explained. 8 मार्क्स के लिए आ जाए जी मार्किंग स्कीम के ऊपर जरा। तो सबसे पहली चीज तुम्हें पता है डायग्राम बनाना है। डायग्राम कौन सा वाला होना चाहिए था? अकॉर्डिंग टू द मार्किंग स्कीम दे आर ओके विद द हाउस होल्ड वाला एंड फर्म वाला, और किस तरीके से गुड्स जो हैं या इनकम्स जो हैं वो इस तरफ फॉलो थ्रू करती हैं, और जो कंजम्पशन है, जो एक्सपेंडिचर है, वो इस तरीके से फॉलो थ्रू होती हैं। इफ़ यू माय स्टूडेंट्स आई वुड हैव एक्सपेक्टेड, एंड क्योंकि उन्होंने ओपन इकोनॉमी की बात की है तो इट्स अ फोर सेक्टर इकोनॉमी। यू कुड हैव टॉक्ड अबाउट द विड्रॉल्स और द लीकेजेस जिसके अंदर सेविंग्स, सॉरी वन सेकंड। So household के point of view से we talk about households के point of view से, yeah, sorry my bad. Savings was the withdrawal, और किस तरीके से savings जो है as injection वापस इकोनॉमी के अंदर as investment आती है। फिर थ्री सेक्टर क्लोज्ड इकोनॉमी के अंदर टैक्सेशन इज द लीकेज एंड गवर्नमेंट स्पेंडिंग से वो पैसे वापस आते हैं, एंड इंपोर्ट से ओपन इकोनॉमी के अंदर पैसा बाहर जाता है और एक्सपोर्ट से वो पैसा वापस आता है। आई वुड हैव लुक फॉरवर्ड टू सीइंग दिस वन, बट वो तो सिंपल के ऊपर भी खुश हैं कि अगर बच्चा एक सिंपल सर्कुलर फ्लो डायग्राम बनाता है showing expenditure flows from households to firms and income flows from firms to households. They're happy. They're willing to give you 2 to 3 marks diagram and how the money is flowing. They're okay with that. मेरे ख्याल में तो और थोड़ा सा तुम्हें इसको heavy करना चाहिए था with the withdrawals and the leakages. In fact, there should be further discussion. So what is meant by circular flow of income in an open economy, and an explanation of that, not just diagram. Here, your further discussion should be about the injection and the leakages, और उसका economic growth क्या होती है? Economic growth क्या होती है? Output का increase होना. Just a suggestion of output increase होने की जब हम बात करते हैं या economic growth की बात करते हैं, तो just clarifying that
An increase in economic growth means that there is an increase in incomes and there's an increase in expenditure, increase in GDP, basically, more output, right? तो फिर ओपन इकोनॉमी की खास बात की है, I would be looking at कि अगर my analysis is in a fourth sector, open economy, so I am looking at this. Economic growth के ऊपर क्या इसका डिस्कशन है? If the injection of exports is greater than the withdrawal or leakage, which is the import, what is going to happen? More money is coming into the system than going out. Economic growth will increase. If exports is less and imports are more, there's more money going out, economy is likely to shrink. If it's balanced, then economic growth is likely to be stable. I guess this is what they would have wanted in AO2 analysis. Analysis should focus on both injections into and leakage. इसको define भी करना चाहिए था from the circular flow. The analysis should be focused on an open economy, and examples of included should include कि आप exports की बात करो, or examples of what should be about the import. Notes, if only injections or leakages are considered, or if the analysis does not cover an open economy, then maximum marks for analysis out of 3 you give is 2. और किस तरीके से you have to connect के output would have increased, focusing on that. ठीक है? Evaluation should explain how the relative size of injections and would lead to, oh, sorry. So I've actually given you the evaluation. Which one is bigger than what, so kya hoga? So that would have been the evaluative part in this case. ठीक है? Honestly, in my opinion, this should have been here compared to the trend that they've been going, or evaluation should have been how open the economy is considering the other factors. अगर आपकी इकोनॉमी आप एक ओपन इकोनॉमी का हिस्सा हो, जो बहुत ज़्यादा इंटरनेशनल ट्रेड के अंदर उसकी जो है ज़्यादा रोल है, तो फिर उस केस के अंदर बाकी फैक्टर्स जो आपके सेविंग्स एंड टैक्सेस और इन्वेस्टमेंट्स और गवर्नमेंट स्पेंडिंग है, उसके हिसाब से अगर एक्सपोर्ट्स और इंपोर्ट्स के नंबर्स वुड हैव बीन ऑन अ बिगर साइड, तो फिर इकोनॉमिक ग्रोथ के ऊपर उसका ज़्यादा इम्पैक्ट आता ऑफ बीइंग एन ओपन इकोनॉमी. लेकिन अगर आप एक बहुत क्लोज्ड इकोनॉमी हो, like maybe like North Korea who smuggles stuff, or Iran who sells very limited stuff to the world, तो ऐसी क्लोज्ड इकोनॉमी के अंदर ओपन के अंदर x minus m के इम्पैक्ट would not have made a bigger impact. So that would have been, in my opinion, should have been the evaluation. But I guess यहाँ पे you might get lucky with this idea, but this is how this would have been answered. If the part B was from the supply side point of view, question is assess whether supply side policy is the most effective way to achieve long run economic growth. L1, L2, L3 के हिसाब से आंसर होना था इसका, और AO1 or AO2 in your evaluation. Is it the most effective? That's your evaluation. How will it have an effect? What are the ways through which it will not have effect? Advantages, disadvantages, सब 8 मार्क के लिए होगा. तो supply side policy के अंदर सबसे पहले a few things that you would want to suggest about supply side policy. कि सप्लाई साइड पॉलिसी लॉन्ग रन होती है, वो एग्रीगेट सप्लाई को शिफ्ट करता है LRAS को, और उसकी वजह से तुम डायग्राम बना के भी शो करते हो कि कैसे LRAS इंक्रीज होता है तो मुल्क की पोटेंशियल इंक्रीज होती है. देन यू कैन सजेस्ट सम एडवांटेजेस ऑफ दैट कि किस तरीके से इट विल लीड टू एग्रीगेट सप्लाई टू इंक्रीज इन द लॉन्ग रन. A couple of supply side policies could have been education and training, or privatization, or deregulation. And the disadvantages is it takes time for it to have an effect.
there needs to be investment by government, which they might not have, तो ये सारी बातें तुम्हारी एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस के पॉइंट ऑफ व्यू से जितनी भी तुमको आती हैं, ठीक है, एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस, अ फ्यू यू हैव टू गिव। फिर उसके बाद यू कैन सजेस्ट एन ऑल्टरनेटिव पॉलिसी। अच्छा, a discussion of the extent to which supply side policy can lead to growth in both AD and AS। तो ये वही वाला एल और एस का डायग्राम है जिसके अंदर हम बात करते हैं ना कि इकोनॉमी अगर अभी तो यहाँ पर है और अगर आप एल आर ए एस बढ़ा देते हैं तो इज इट एनी बेनिफिशियल? इनफैक्ट ये तो और वर्सनिंग सिचुएशन हो गई, आपका जो गैप है इन डिफ्लेशनरी गैप वो और मजीद इंक्रीज हो गया है, सो दैट्स क्लियरली नॉट अ गुड साइन। सो इकोनॉमिक ग्रोथ माइट नॉट इंक्रीज, एक्चुअल वर्सेस पोटेंशियल वाली बात थोड़ी सी। A discussion of at least one alternative policy, कि fiscal policy या monetary policy might be much more effective, उसके advantages, disadvantages, in case of अगर आप obviously fiscal की तरफ जा रहे हो, fiscal हो या monetary हो, ये demand side policy हैं, ये short run के अंदर ज़्यादा effective होती हैं, एक्चुअल को इंक्रीज करती हैं, और हो सकता है अगर एक्चुअल को पोटेंशियल की तरफ ले जाए तो वो सप्लाई साइड पे भी हेल्प कर सकती है। बट देन यू हैव ऑब्वियसली मॉनेटरी और फिस्कल पॉलिसी की देयर आर डिसएडवांटेजेस ऑन द इफेक्टिवनेस ऑफ दिस पॉलिसी, कि वो कितनी अच्छी तरीके से इम्प्लीमेंट हुई है कि नहीं हुई है, ठीक है। With their discussion on the extent to which those policies can have an impact, वही वाली यही ADAS के साथ कि अगर तुम यहाँ पे इसको इंक्रीज करते हो तो इकोनॉमिक ग्रोथ में इंक्रीज के अंदर कोई एडवांटेज है, और अगर हम पोटेंशियल पे हैं तो क्या AD के इंक्रीज से विल इट हैव एनी इम्पैक्ट? So they're saying whether the supply side policy is the most effective to achieve long run economic growth. So जहां तक सप्लाई साइड पॉलिसी की बात है, इन अचीविंग लॉन्ग रन इकोनॉमिक ग्रोथ के हिसाब से, इन माय ओपिनियन सप्लाई साइड पॉलिसी इज वन ऑफ द वेज टू गो अबाउट इट, यू नो। अब उसमें से तुमने चूज करना है कि अगर तुम सप्लाई साइड पॉलिसी चाहते हो तो वेदर यू गोइंग थ्रू द एजुकेशन वाली साइड के प्राइवेटाइजेशन वाली साइड, लाइक फॉर एग्जांपल इन पाकिस्तान केस राइट नाउ हम अपनी सप्लाई साइड पॉलिसी को फोकस कर रहे हैं कि चलो जी हम अपने सारे नेशनल लेवल के जो इदारे हैं, इंस्टीट्यूशंस हैं, लेट्स प्राइवेटाइज देम एंड लेट्स होप कि कंपटीशन जो है दैट वुड लीड टू एन इम्प्रूवमेंट इन द एफिशिएंसी of these institutions and might increase the aggregate supply. But you might say, okay, you know what, right now there are more people out of school right now, which long run ke andar are going to become a bigger burden. So maybe educating those people would be a better idea for long run. So supply side policy ke andar bhi kaun si policy might be a zyada better idea. Um, या फिर तुम ये कंपेयर कर सकते हो कि सप्लाई साइड वर्सेस, आई थिंक मेरी ख्याल के अंदर तो यहाँ पे योर डिस्कशन अबाउट कि इफ द इकोनॉमी स्टैंड्स एट पोटेंशियल तो सप्लाई साइड पॉलिसी विल बी द बेस्ट थिंग टू डू, एंड अगर आप बिलो पोटेंशियल पे हो तो मे बी दोज पॉलिसीज विच में इंक्रीज एग्रीगेट डिमांड and aggregate supply in the long run. For example, government spending on education right now will increase AD to the right and make you go towards potential. But once kids have been educated, in the long run, skill level and productivity will increase the supply side. और ये उस तरीके से, so along this line तुम्हारा ऐसे का structure होना चाहिए मेरी नजर के अंदर। If we see discussion on that level, तुमको फिर हम अच्छा लेवल 3 वाले आंसर्स और लेवल 2 वाली वैल्यूएशंस देंगे। लास्ट क्वेश्चन, explain what is meant by the term protectionism and consider the effectiveness of using tariff as a method of protectionism। पहली बात 3 मार्क के लिए protectionism का वर्ड and some of the ways through which protectionism can work, and फिर AO2 के लिए tariff कैसे would work and would not work, and then finally evaluation के अंदर effectiveness में we can have a comparison. So let's see.
Protectionism is when government attempts to protect domestic firms against foreign competitors, and obviously it reduces the free market idea, it restricts trade by increasing the price or competition को out करने के लिए, and through those things एक general overview कि ये protectionism असल में चीज क्या है. So it is to protect the local industries against foreign competition. It can be done through raising the prices or reducing the foreign competition from coming into the country. ठीक है जी, ये तुम्हारा जनरल आइडिया होना चाहिए. फिर टैरिफ डायग्राम will help, although it is not essential. We've told you before, diagram सिर्फ उसके बाद तुम diagram अगर बना भी लेते हो तो उसकी explanation is the main thing कि किस तरह से price बढ़ती है और imports जो है वो reduce हो जाते हैं और कैसे local businesses जो है ज़्यादा revenues कमा सकते हैं. तो that would be the case. फिर तुम बात कर सकते हो कि elastic inelastic के केस के अंदर how well it will work, how well it will not work, या फिर हैविंग अ डिस्कशन ऑफ कि टैरिफ लगाने से खास तौर पे अगर इसेंशियल गुड्स हैं तो किस तरीके से वो कॉस्ट पुश इन्फ्लेशन क्रिएट कर सकते हैं, लाइक इन द केस ऑफ कंट्रीज लाइक पाकिस्तान इंपोर्टिंग ऑयल एंड देन पुटिंग टैरिफ ऑन इट, या फिर इवन लाइक टैरिफ लगाने की वजह से जो है पॉसिबल रिटेलिएशन हो सकती है. सो जस्ट अ काउंटर आर्ग्यूमेंट, 2 मार्क और इसके लिए 2 मार्क और फिर काउंटर आर्ग्यूमेंट का 1 मार्क, राइट? But it depends on how well you're writing the first 2 marks. Yeah. And then the evaluation that you have to consider, evaluation should consider how effective tariffs may be, considering both how they can protect domestic businesses and the associated problems. तो इसके अंदर क्या होगा, इस केस के अंदर evaluation would be कि जब आप टैरिफ लगाते हो तो जब आपके गुड्स इनइलास्टिक थे तो उसके अंदर जब आपने टैरिफ लगा रहे हो तो कितना ज़्यादा टैरिफ लगा रहे हो. बहुत ज़्यादा टैरिफ लगा रहे हो तो maybe that might have a much larger reduction in the imports. और अगर थोड़ा सा टैरिफ लगा रहे हो और गुड्स जो है वो इनलास्टिक थे तो उस केस के अंदर उसके अंदर कोई ज़्यादा कोई वो फ़ायदा होगा नहीं, या बिजनेसेस के कितनी ज़्यादा फ़ायदा हो सकता है इन टर्म्स ऑफ कितना ज़्यादा उनका रेवेन्यू में इंक्रीज आएगा भी कि नहीं. अगेन अगर सप्लाई इनलास्टिक होगी तो क्वांटिटी के अंदर कोई ख़ास इंक्रीज आएगा नहीं. आई एम टॉकिंग अबाउट PES, firm's ability to increase the goods. Like for example एग्रीकल्चर गुड्स के अंदर PES बहुत inelastic होता है, तो अगर आप टैरिफ लगाते हो तो सप्लाई में कोई खास इंक्रीज आएगा नहीं. तो प्रोड्यूसर्स विल मेक अ लॉट ऑफ मनी, but the consumers are not going to be better off, right? So tariff की वजह से किस तरीके से consumers might be worse off. इसमें I guess you can even talk in terms of किस टाइप के गुड्स के ऊपर, नेसेसिटी के ऊपर टैरिफ लगाने की इफेक्ट्स ऑन द ओवरऑल इकोनॉमी और उसकी इफेक्टिवनेस वर्सेस अगर तुम लग्जरी पे लगाते हो तो हाउ इट विल हैव एन इम्पैक्ट. सो इवैल्यूएशन शुड बी अराउंड दैट. And lastly, assess whether free trade is always better. Okay, so I can see a lot of advantages that I have to write for free trade. And then a policy of protectionism. So that means advantages, disadvantages मुझे लिखने होंगे free trade के. For a developing economy that wishes to trade internationally, फ्री ट्रेड इज इट ऑलवेज अ बेटर पॉलिसी. अब वो फिर हम आगे जाके इवैल्यूएशन में बहुत सारा डिस्कशन होगा. दिस क्वेश्चन इज मोर अबाउट नॉट योर जनरल आंसर जो हम स्टैंडर्ड लिखते आए हैं, बट इट्स अबाउट हाउ यू स्ट्रक्चर योर आंसर. ऑलराइट, दिस क्वेश्चन इज मोर अबाउट द स्ट्रक्चर. तो इसके अंदर फ्री ट्रेड के एडवांटेज डिसएडवांटेज ऑब्वियसली, लाइक ज़्यादा क्वालिटी मिलेगी, बिगर मार्केट्स मिलेंगी, स्पेशलाइजेशन होगी, एफिशिएंसी होगी, प्रोडक्टिविटी लेवल्स होंगी, अच्छी प्राइस के ऊपर कंज्यूमर्स को गुड्स मिलेंगे एंड ऑल ऑफ दैट, राइट? But then free trade के disadvantage that if a country does not have the comparative advantage in certain things, they might experience a lot of competition and they might go out of business. Unemployment might happen as a result. या अगर एक कोई इकोनॉमी एक सर्टेन टाइप के गुड पे बहुत रिलाई करती है और उस पर आपने टैरिफ हटा दिया और कंपटीशन आ गया तो यू कैन हैव मैसिव अनएम्प्लॉयमेंट एंड बैलेंस ऑफ पेमेंट प्रॉब्लम्स. सो अलोंग दैट लाइन एडवांटेज डिसएडवांटेज, राइट?
of free trade. ठीक है. um, a discussion of the advantages and disadvantages of free trade, and लिखा हुआ है, and a discussion on the advantages and disadvantages of protectionism, both in the context of developing economies. ठीक है जी. So they're saying guidance के अंदर efficient allocation of resources due to specialization and comparative advantage, वो तो हमने डिस्कस कर लिया. Factor endowment की basis पे they're going to take ये free markets के सारे advantages, higher outputs and prices will be lower and how consumers will benefit. So they want a good explanation of that. Disadvantage over exploitation, unfair competition. Developing a point of view say is the main thing that you want to have. It is likely that the advantage of protectionism will result from the disadvantages of free trade, and the disadvantage of protectionism will result from the advantages. You understand what they're saying? What they're saying is कि भाई एक का advantage दूसरे का disadvantage है, और एक का disadvantage दूसरे का advantage है, in a way, right? But अगर आपने separately उनको लिख भी दिया है, तो there's no harm in that. अब the real evaluation is कि जी फ्री ट्रेड इज ऑलवेज द बेटर पॉलिसी. ठीक है. अब डेवलपिंग कंट्रीज दैट विशेस टू ट्रेड इंटरनेशनली. नाउ व्हाट हैपेंस, अब एक डेवलपिंग कंट्री है एंड इट विशेस टू एक्सपोर्ट अ सर्टेन टाइप ऑफ गुड, राइट? अब बात यह है कि प्रोटेक्शनिज्म के अंदर समटाइम्स व्हाट यू डू इज कि आप बाहर के गुड्स के ऊपर जो है टैरिफ लगा देते हो. ठीक है, कि इंपोर्ट कम हो जाए. और प्रॉब्लम क्या होती है कि वो जो गुड आप एक्सपोर्ट करना चाह रहे हो, वो जो आप गुड्स इंपोर्ट कर रहे थे और अब उस पर टैरिफ लग गए, प्रोटेक्शनिज्म लग गई है, अब वो महंगा आपके पास आ रहा है, तो अब आपकी कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन भी ज़्यादा हो जाएगी. अब आप एक्सपोर्ट के लिए भी competitive नहीं रहोगे दुनिया में. तो दिस सॉर्ट ऑफ एन आइडिया एक्चुअली एडवोकेट्स मोर टूवर्ड्स फ्री मार्केट, कि अगर फ्री मार्केट होगी तो आप बाहर से रॉ मटेरियल भी मंगाओगे बगैर कोई टैरिफ्स के, बगैर किसी प्रोटेक्शनिज्म के, और फिर उसको तुम रिफाइन करोगे एंड यू कैन एक्सपोर्ट दिस आल्सो. सो इन दैट केस इट माइट बी अ फेवरेबल आइडिया टू डू. ठीक है. It might not be a favorable idea in a situation where the developing country is still in the stages of finding the comparative advantage in that industry. Or अगर protectionism नहीं है, तो you will never be able to develop those industries. Sometimes it's quite possible कि आप जो वो good बना रहे हो without comparative advantage, it might be expensive. तो गवर्नमेंट प्रोटेक्शनिज्म के अंदर उसको सब्सिडी दे रही है टू मेक इट cheaper so that you can internationally export it, right? So along that line, you have to have a discussion कि overall जो है protectionism developing country के लिए जो trade करना चाह रही है, उसके लिए क्या free trade would be a good idea, or maybe protectionism might be handy for them. मेरी नज़र के अंदर प्रोटेक्शनिज्म होनी चाहिए उन इंडस्ट्रीज के लिए, बिकॉज फॉर देम टू फाइंड अ कंपैरेटिव एडवांटेज इट मे बी प्लॉसिबल, राइट? तो ये तुम्हारी जो है डिस्कशन होना चाहिए. अच्छा, रिमेंबर इसके अंदर ये जैसे डंपिंग एंड अनफेयर कंपटीशन की बात हो रही है, या सर्टेन इंडस्ट्रीज जो है जो अपना कंपैरेटिव एडवांटेज ढूंढना चाह रही है, वो डिसएडवांटेजेस के अंदर ये लोग लिख रहे हैं कि फ्री ट्रेड के अंदर फिर ये डिसएडवांटेज हो सकते हैं कि वो कंट्रीज विल नॉट बी एबल टू फाइंड देयर ग्राउंड एंड ऑल. तो that's how your paper should have been. I hope now you have a much more clarity how you did it, ठीक है, how you attempted the paper. So I hope you've done well. So कितना लाना है threshold? Probably 24 out of 60. All right. Take care.